Good morning, students. Our today's topic is for 10th class carnivores, omnivores, and what is the mode of nutrition in fungus, and Holozoic nutrition, and the amoeba who performs this process, right? So, today I will cover all these topics. So, what are carnivores? First, the animals that eat the flesh of other animals as food are called carnivores. जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनका फ्लैश खाते हैं, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, राइट? एंड न्यूट्रिशन ऑफ दिस टाइप इज कार्निवोरस न्यूट्रिशन. That type is called carnivorous nutrition. In previous lecture we have done herbivores. You can see that lecture also if you have missed it, right? So the carnivores are example for this nutrition or this type of animals are tiger, lion, dog, jackal, wolf, bear, crocodile, sharks, etc. These animals eat other animals. So to eat other animals, they should have powerful and sharp teeth. That's why these animals have sharp teeth and powerful jaw. These are called predators, and the animals, those who are eaten by these carnivores, are prey of these predators, right? So eagles, hawks, owls are also the carnivores birds, right? And use their sharp talon, it is that kind of beak and vision to catch the prey. Okay, they have sharp talon. Okay, so there are also carnivorous plants also. Mostly the plants are autotrophic, but here if you see, the plants are carnivorous plants. This category is coming in heterotrophs, right? These are the carnivorous plants because they are dependent on other animals or insects, you can say flies. Already I have covered this topic in previous lecture, and they are given the examples: pitcher plant, liverwort, etc., right? Fungus is also carnivorous, and microorganisms such as bacteria are also carnivorous. They are dependent on other animals, other organisms for their food. The animals that eat both plants and animals, these are called omnivores. What are the omnivorous organism? Those organism or those animals that eat both plants and animals. They can eat plants as well as animals. So we are in this category: human beings, cats, dogs, pigs, bear, jackal, alga, fungus, squirrel, birds, fish, turtle, cranes, chicken. You can see these examples all around in your environment. Okay, you can observe these animals or birds, what they eat, right? So omnivorous category include these examples: human beings, cats. All these example will be categorized in omnivorous. Okay, so here we have completed the topic herbivores, carnivores, and omnivores, right? Now our next topic is the mode of nutrition in fungus. What is the mode of nutrition? Actually, I have prepared all these notes. You can take advantage of these notes also. You can take screenshot and learn these notes, because in bio learning is most important. First of all, clarify your concept. After that, you have to make the notes, or you have to learn whatever book you are using. And okay, so I have also prepared the notes for you. You can take the notes, screenshot of these notes, and take the advantage, right? It will save your time, because 10th is a board class. You can save the time with these notes by notifying it. Okay, so the mode of nutrition in fungus. Mode of nutrition in fungus is saprophytic nutrition. Already in previous lecture I have covered this topic also. Saprophytic mode of nutrition is the nutrition in which animals
depend on the dead and decaying matter. They take the vital nutrients from dead and decaying matter. Whatever dead is there, they will survive on this dead material, right? Examples of saprophytic nutrition in animals or organism are mushroom, yeast, rhizophus. You can find more examples also, but here I have written mushroom, yeast, rhizophus, and so on. So it is saprophytic nutrition. Fungi will show the saprophytic mode of nutrition because it survives on the dead and decaying matter, right? Now, next is Holozoic nutrition. We are included this in nutrition. Why? Because in Holozoic nutrition, the animal take complex food, complex solid food, and then break it down into simple form, right? So we also take solid food, and in our stomach or in our intestine, our digestive system help us to digest this complex food into simple one, right? So we are also dependent and we are also showing the Holozoic nutrition. And after taking the important nutrients, unimportant, or you can say waste material is excreted from the body. We also show this kind of process, right? So the mode of nutrition in which all animals take in complex solid food material and break it into simple material is called Holozoic nutrition. Okay. Steps in nutrition, this type of nutrition. First of, ingestion. Ingestion means taking the food, solid food, through mouth, right? Then digestion. It is internal process. Digestion take place internal our body. Absorption. After digestion, the important nutrients are absorbed by our body to get the energy, to get the nutrients. Then assimilation. Assimilation is also similar to absorption. Okay. And then after that, whatever waste is there, it is excreted. This process comes under the egestion, right? So here are the steps: digestion, absorption, assimilation, and egestion. Now what is ingestion? Already I have told you, taking food through mouth. Digestion. Those animals who have no mouth, they will take this through their body surface, okay, body membrane, right? In amoeba, I will show this, okay. Digestion. Next, changing complex food into simple form of material with the help of enzymes. This process is taken by enzymes in our body or in body of other organisms also. After that, absorption. This is a passing of simple soluble nutrients which is absorbed by our body and then transferred to the blood or lymph. Okay, in our body, blood and lymph take this soluble simple nutrients and give us energy. With this energy, we do all the metabolic activities in our life, right? Then assimilation. After that, utilization of absorbed food for various metabolic activities. Assimilation. And then after it, egestion, last step, where the waste material is excreted, undigested food. Right? Now this Holozoic nutrition is shown by the amoeba. In your book you have this example and how it takes place in amoeba. It has shown. First of all, amoeba, these pseudopodia. What are the pseudopodia? Pseudo means false, podia mean foot. These are the false foot, okay, for their movement. So first of all, the structure. Here is the membrane. If you see, outer covering is membrane and inner there is a liquid, some fluid is there. It is endoplasm, and endoplasm is covered with some thin layer, that is ectoplasm. Ecto means outer, endo means inner.
right? Here is the food vacuole. Whatever food they will take, it will be digested by this vacuole. In it, lysosomes are there. These are lysosomes are also called suicidal bags because they can digest the food. Lysosome have enzymes, they can digest the food whatever they are taking, right? And here is the contractile vacuole. Every organelle has different function. It is the nucleus. Without the membrane, no membrane will be there in its nucleus, right? So membrane, contractile vacuole, here is the food vacuole, endoplasm, ectoplasm, nucleus, and this is the pseudopodia and outer membrane of the body of the amoeba, right? You can draw it and will mention all the organelles, right? Then how the process of taking food is done by the amoeba. First of all, where the food is there, they will sense it, and here ingestion will take place. It will make its body like this around it will surround this food. After that, it will take this food inside the food vacuole like this. Food is inside the food vacuole, which will be taken inside its body. These two steps are the part of the digestion. First two steps sense the food and making this type of shape of the body included in the ingestion, right? After that, when the vacuole is taking this food and this vacuole is moving inside the body, these two steps will come under the digestion. And in this vacuole there are lysosomes which will help this solid food to break down into simple form. Here the solid food will be digested and will be broken down into the simple form, right? And the simple form, after that the nutrients will be absorbed by the body of the amoeba. So here the absorption will occur, and this absorbed nutrient or these absorbed nutrients will be used by this organism to take the energy for its various metabolic activities, right? For movement, for digestion, for everything, for its living and reproduction, right? So here the assimilation will take place. After that, whatever waste will be there, it will be secreted by its body. This will be secreted like this. You will show it like that, right? So it will be included in ingestion. These two steps were absorption and assimilation. You can write the steps here. Number 1, here where ingestion is taking place, number 1. Then digestion in 2 steps. Number 2, here the digestion has been taken place, right? After that digestion, when the enzymes break down this food material into simple form, the absorption will take place. It is number 3. After absorption, this absorbed energy, this absorbed nutrient, these absorbed nutrients will be taken or will be used for the energy generation. Here is the assimilation. Whatever metabolic activities all depend on this energy. So number 4 is assimilation, and after that number 5 last excretion, right? You can draw it into the steps. I have mentioned it. अभी मैं ये लेक्चर जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर देती हूँ. कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और जो न्यूट्रिशन इनका है उनको कार्निवोरस न्यूट्रिशन बोल देते हैं. और इसके एग्जाम्पल टाइगर, लॉयन, डॉग, जैकल, वुल्फ, बियर, क्रोकोडाइल, शार्क, ये सब है, राइट? इसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, ईगल्स, हॉक, आउल्स, ऑल दीज आर इंक्लूडेड. ये सब कार्निवोर्स हैं. एंड इनकी शार्प बीक, टैलन जो है वो शार्प रहती है. विजन इनकी बहुत शार्प होती है.
इसलिए वो अपने प्रे को पकड़ पाते हैं। और ये जो जितने भी एनिमल्स हैं जो हंटिंग करते हैं दूसरे एनिमल्स की, उनको प्रीडेटर्स बोलते हैं। ओके, प्रीडेटर्स, राइट। और जिसको वो खाते हैं उसको प्रे बोलते हैं। उसके बाद कार्निवोरस प्लांट्स भी हैं, कुछ प्लांट इंसेक्ट्स खाते हैं, और फंगस एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब जो है ये भी कार्निवोरस में ही इंक्लूड किया जाता है। फिर ओमनीवोरस क्या है? ओमनीवोरस वो एनिमल्स हैं जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को खाते हैं। उसमें ह्यूमन बींग्स भी हैं, हम सब्जियां भी खाते हैं, हम चिकन भी खाते हैं। कैट्स भी ऐसे ही है, वो वेज भी हैं, नॉन वेज भी खाती हैं, मतलब प्लांट्स पे भी डिपेंडेंट हैं। आप उनको प्लांट्स रिलेटेड कुछ रोटी भी दोगे तो रोटी खाएंगी, दूध में डिप कर दोगे तो उसमें वो खाना खाती हैं। डॉग भी ऐसे ही है, और वो माउस भी खाता है। कैट जो है वो रैट्स खाती है। डॉग भी जो है नॉन वेज चिकन खाता है, ठीक है। पिग्स हैं, बियर्स, जैकल, एल्गा, फंगी, स्क्विल्स, ऑल दीज एनिमल्स, ऑल दीज बर्ड्स, ये सब बिग फिश स्मॉल फिश को खाएगी। बर्ड्स इंसेक्ट्स खाते हैं। टर्टल्स भी लावा एंड एग्स जो पानी में है उसको खाता है। और ये आप इसको ग्रास या कुछ ग्रीन पीस दोगे वो भी खाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज ये सब ओमनीवोरस में इंक्लूड किया जाता है। ये सारी एग्जाम्पल हैं। फिर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगस। तो हेयर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये डेड मटेरियल पे डिपेंड करता है, डेड मटेरियल इनटेक करता है, इसलिए ये हम बोल देंगे ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन शो करता है। और इसमें और एग्जांपल है मशरूम, यीस्ट, राइजोफस, राइट। फिर होलोजोइक न्यूट्रिशन आ जाता है हमारा नेक्स्ट। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? वो न्यूट्रिशन जिसमें एनिमल्स क्या है सॉलिड फूड लेते हैं और उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उनकी बॉडी जो है ब्रेक डाउन करती है सिंपल फॉर्म में। फिर उससे क्या है न्यूट्रिएंट्स लेके और जो बाकी वेस्ट है वो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप्स आ जाते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ओके, इन स्टेप्स को आपको लर्न करना है। तो ये स्टेप्स सारे मैंने यहाँ बताए हैं। इंजेशन क्या है? जब हम माउथ से खाना लेते हैं या व्हाटएवर, जस्ट लाइक अमीबा, इसमें माउथ नहीं है, ये अपने मेम्ब्रेन के थ्रू लेता है, तो वो इंजेशन में आ जाएगा। फिर डाइजेशन होता है, कम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में जाते हैं, बदले जाते हैं। वो एंजाइम्स हैं हमारे अंदर, कुछ एसिड्स हैं जो काम करते हैं। एब्जॉर्प्शन होती है, फिर सिंपल सॉल्युबल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड और लिम्फ में जाते हैं, वहाँ एब्जॉर्प्शन होती है। फिर एब्जॉर्ब फूड को एसिमिलेट किया जाता है, कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है एनर्जी की वो दी जाती है, तो उसको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। फिर अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ओके, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल है अमीबा, ह्यूमन बींग्स, प्रोटोजोआ एंड अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अमीबा में ये सूडो मीन्स झूठ, सूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फुट, झूठा फुट मतलब ये फुट नहीं है, लेकिन वो चलने के लिए अपनी मेम्ब्रेन को उस तरीके से कन्वर्ट कर देता है कि वो पैर जैसा लगता है, इसीलिए उसको झूठा फॉल्स फुट बोल देते हैं। और ये जो प्रोसेस है आगे फूड की, वो फूड को सेंस करता है, फिर इनटेक करता है। ये इंजेक्शन में आ गया, नंबर वन हमने डाल दिया यहाँ। ओके, नंबर वन। अभी यहाँ डाइजेशन आगे जब वो वैक्यूल के अंदर जाके बॉडी में जाता है तो यहाँ एंजाइम जो है वो इसको ब्रेक डाउन करेंगे और इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमने दोनों को नंबर 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गया डाइजेशन। फिर उसके बाद सिंपल न्यूट्रिएंट से जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, ये हो गया नंबर 3 एब्जॉर्प्शन। फिर जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किए हैं ब्लड और लिम्फ में, वो एनर्जी जो है वो हर बॉडी पार्ट को पहुंचेगी, जिससे कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, दैट इज़ असिमिलेशन, वो असिमिलेशन हो जाएगी। और जो वेस्ट है वो बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसको कि हम बोलते हैं इजेशन। ओके, आई होप you all got the concept. Okay, we'll meet you tomorrow with next concept. और जो भी एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कंसेप्ट आप लोगों को लगता है क्लैरिफाई करना है
फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स का जो भी है, आप मेरे को वो कंसेप्ट यहाँ पे शेयर कर सकते हो कमेंट्स में। ओके, तो मैं आपको उससे रिलेटेड जो भी मेरे पास कंसेप्ट आएगा, मैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए ट्राई करूँगी और वीडियो शेयर करूँगी। ओके, एंड आई विल अप्रिशिएट योर स्टेप इफ़ यू विल शेयर दोज कंसेप्ट वेयर यू हैव डाउट, राइट? I will make the video and will share that video or upload the video soon, right? So that no problem should be there in your boards exam. And wherever you need the notes also, I will prepare the new notes for those topics also. Okay, I will help you. Okay, thank you. Have a good day. Bye.